Hello. Hello. Anybody can respond. You are getting my voice or not? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Santanu. Please switch on your camera. Most of them have switched off their camera. Please switch on it. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Once again, we are on the previous platform. Yes, sir. Where we have started. Yes, yes, yes. Good morning, sir. One student is Redmi Note 7. Good morning. सर 11 के बाद भी कंटिन्यू रह सकता है क्या ऑनलाइन क्लास? Continue means क्या? मेरी class. My Class schedule is continue. 10 to 11. All no sir, ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू रह सकता है, ये पूछ रहा है वो। मतलब और कोई दूसरी क्लास आपकी? नहीं सर, मतलब ऑनलाइन He ही is होगा। talking about 11 April, not 11 Okay. o'clock. Okay, okay, okay. Look, it all depends on the government decision. Good morning, sir. Good morning, Shubham. Redmi Note 7. Redmi Note 7. Rename yourself. Means your ID. Look, I have taken your online classes previously, and you all are very aware about my way how I conduct online classes. I always try to keep similarity between your online class and offline class. Fine. And this system is not new for you and for me.
So in the same manner, we will again conduct our, we will do our online classes. Fine. If you have to say anything, if you have to ask anything, please raise your hand. I will definitely give you opportunity to ask or to say something. Fine. Now, in the, are you getting my voice? Because I am not getting any response. Yes, sir. Your voice is clear. Okay. In last class, as you all have seen the real router and how to use this router for configuration. Fine. And look, my dear friend, as you all know that we have done revision till the topic which I have covered in previous classes. And now the whole batch is at the same platform, the same level. Now we have to start about the static routing. Fine. Static routing. I think few students have done it. The static routing is very simple because in last classes we have just studied fine. Sir, some students are in waiting, sir. Okay. Sorry. Give me a glass of water. Now, I'm just going to open my notes because just give me 2 minutes. 2 minutes.
Sir, few students are in waiting room right now. Fine. I have allowed them to join. Now see, I'm going to share my screen. My screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. We have seen about the few basic commands and basic configuration of routers. Fine. Safi Ranjan Kumar. Why are you not keeping? Students are still not understanding that we have to keep our name in a proper format. Sasi Ranjan Kumar. Okay, fine. Now see. First of all, I'm going to draw a diagram which I have used in last class, like 3 router combination. You all know it well? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, what is the command show flash? Show flash to see the flash memory detail. To see the flash memory detail. Okay, sir. Actually, today I'm facing some problem with this Google Doc. Google Doc is not supporting the full format. I'm just trying to download it. Okay, fine. Let's keep it. Just use these 3 routers for 3 different networks. Router, I'm going to connect a local network with this. You have already seen this kind of diagram on the board. I'm just drawing it on this paint. Now I have to connect these routers with a serial cable. And for router to router connectivity, which port is used? State one. Serial port is used, sir. Okay. Serial port is used. And to connect with the local network means switch. This line is representing a switch. Fast Ethernet. Fast Fast Ethernet, Ethernet, gigabyte Ethernet, right? This one is
In our case, serial 0/0/0, fine, and it will be a BCE interface. Any doubt? And at another end, again serial 0/0/0, and it will be DTE interface, because as you have seen in the classroom or in the lab that I have shown that this is a serial cable. See this one end, at the one end there was written BCE, and at another end DTE. Have you seen it? Yes, sir. Yes, sir. I'm talking about that cable which you have just used to connect two routers. That was too much thick, and its end is also very heavy. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Black color. Black, actually it was not in black, it was in gray. Yes, sir. Similar to black. Now, at this interface, so I'm going to use serial 0/0/1, and again it will be BCE, and at this end serial 0/0/0, and it will be but obvious DTE. Fine. And now at this interface, fast Ethernet 0/0, fast Ethernet 0/0, fast Ethernet 0/0. Correct? Some students are in waiting list. Again, Shivam Singh. If they will join on time now, so it will very comfortable for me to conduct a class uh, in uh, in a good flow. Okay, no issue. Today is the first day. Fine. Now, this is just the physical connectivity of 3 routers and 3 local networks. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? किन्हीं को भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो, अभी पूछ लीजिए, क्योंकि आपने राउटर देख लिया है, राउटर टू राउटर कनेक्ट होने वाला केबल देख लिया है, राउटर से लोकल नेटवर्क कैसे कनेक्ट करेंगे, इसके लिए यहाँ पे कौन सा केबल यूज करेंगे? ये केबल कौन सा है? Sir, what is DC? DT. Actually, Yes, sir. just I'm going to show you. Not getting the same picture, because now in these days a smart serial cable is used.
See, this is no, actually this cable is almost similar. Actually, one end is similar, very similar, and another is in totally different. See this cable, serial cable. Its one end is represented as DCE, means data communication equipment, and another end is represented as DTE, data terminal equipment. In our scenario, we can use any end at any interface of router. Like that's why I have decided I will use DCE end at this interface, means router 1, and DTE end at router 2. But at the time of configuration, we should keep one thing in our mind, that at DCE end, we should configure clock rate, data transfer rate. And at DTE end, we should not configure any clock rate. So in case of router 1 configuration, we will configure clock rate. In case of router 2 for serial interface 0/0/1, we will configure clock rate. Fine. In the real scenario, DCE represent service provider end and DTE represent client end. But in our scenario, this is the local network in which we have connected 3 routers. That's why we have decided ourselves that this end will DCE and this end will DTE. But in case you are taking some WAN connection, in that case, DCE end will represent the WAN interface and DTE end will represent your local interface, your local network. Now, is it clear? Yes, sir. Now, which cable is used to connect a local network with router? Twisted pair. Twisted pair cable. Twisted. And in twisted pair cable, straight, cross, or rollover? Which cable is used? Straight over cable, crossover cable, or rollover cable? Sir, roll over. Stay. Straight over cable. Sir, stay. Yes, straight over cable. Actually, rollover cable is not used. Rollover cable is used to configure router, which I have shown you in the classroom, that this is the control cable which we use to configure router. Have you used control cable in the last class? This cable. Yes, sir. Console cable. Sir, yes, sir. Right? Now, सर मॉडर्न जो पीसी है उसमें तो कॉम पोर्ट नहीं होता है उसके Yes. बोर्ड में, तो कनेक्टेड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे वहां पे, अगर ऐसा कुछ कुछ कनेक्शन नहीं करेंगे बाबू, अगर आपके पास में ऐसा ही केबल है, बट ऑब्वियस है कि ये एंड जो है वो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर पे कॉम पोर्ट या सीरियल पोर्ट या RS-232 पोर्ट, ये तीनों नाम एक ही है, ये पोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो इसका कन्वर्टर नहीं, जो कॉम टू यूएसबी कन्वर्ट कर देता है और फिर यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट कर लेंगे। हाँ, इसका एक छोटा सा ड्राइवर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, छोटा सा ड्राइवर होता है, ड्राइवर को सिस्टम पे डाल दीजिए, वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा, मतलब वो कनेक्ट हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा आपका कन्वर्टर जो है। ओके सर। वो कन्वर्टर बड़ा सिंपल होता है, आपको वो मैं कन्वर्टर दिखाई देता हूँ, जब ऑनलाइन नहीं है तो ऑनलाइन चीजें
सी ये प्राइस बहुत ज्यादा दिख रहा है, हाँ, बट मिल जाता है, सस्ता वाला भी आता है, महंगा वाला भी। देख रहे हैं? अब यहाँ पे देखो, ये पिन है, पिन दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ देखो, पिन दिखाई दे रहा है। अब ये वाला एंड कहाँ चला जाएगा? ये देखो, इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। पिक्चर तो है, कनेक्ट कर दिया, यूएसबी से लगा दिया। नाउ क्लियर एवरीबॉडी? बोलिए Yes, सर, sir. इतने सारे बच्चे हैं, Yes, sir. Yes, sir. 28 स्टूडेंट्स, वेरी गुड। Okay, fine. Now again. Now this is the straight over cable, twisted pair straight over cable, which we use to connect a router with local network, means switch or hub. Now in these days, hub is not used to connect with switch. Fine. Now we have to use different IP addresses. First of all, we will decide a local IP for this network. So I am going to use IP address for this network 10.0.0.0 and with subnet mask 255.0.0.0. Fine. And for this network 172.16.0.0 255.255.0.0. For this network 192.168.0.0 and subnet mask 255.255.255.0. Clear? Now, from this network, first valid IP will be used at this interface, second will be at this node, third will be at this node. Are you understand what is valid IP? The range of valid IP of this network will be, valid IP का रेंज क्या होगा इस 10 के नेट सीरीज में? 1 से लेके 10.0.0.1 से लेकर 63 तक सर। 1 से लेकर के 63. 1. बोलिए। अरे सर 10.0.0.1 से लेकर के 62 तक और 63 आपका सर ब्रॉडकास्ट आईपी होता है। 62 बच्चे मैं डिफॉल्ट यूज कर रहा हूं, तो इसका पूरा नेटवर्क क्या जाएगा? Sir, 255 10 sir. 255 sir. हाँ 255.2। 250. राइट? यस सर यस। Yes sir. यही रेंज जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये जो दूसरा वाला नेटवर्क है, इसका 172.16.0.1 से लेकर के 172.16.255.254 तक जाएगा। यस सर। Yes. और इसका 192.168.0.1 से लेकर के 192.168.0.254 250. तक जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑफ क्लास सी। Yes, sir. Yes sir. Awesome. तो अब इसमें से पहली आईपी जो हम लोग इस इंटरफेस पे यूज करेंगे, और ये आईपी यहाँ पे 10.2 10.3 शॉर्ट में बोल रहा हूँ। क्लियर है? Yes sir. अब बात आती है, ठीक है हमने लोकल नेटवर्क पे आईपी यूज कर लिया, अब सीरियल टू सीरियल लिंक करने के लिए भी एक अलग नेटवर्क आईपी चाहिए। तो इन दोनों राउटर के बीच में एक अलग सीरीज चाहिए और इन दोनों राउटर के बीच में एक अलग सीरीज चाहिए। तो at this end we will use this network with this subnet mask, and at this network 12.0.0.0 255.0.0.0
अब यहाँ पे इस सीरियल पे हम लोग यूज कर लेंगे 11.0.0.1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 12.0.0.1 और यहाँ पे 12.0.0.2। ठीक है, Yes, sir. अब जब हम इस तरह के आईपी की बात करते हैं तो अब इनको हमें सिस्टम पे डाल मतलब इसमें डालना भी है राउटर पे। रेडी? चलो तो आप जरा सा देखते हैं। अब अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन देखो, मैं पहले ही अनाउंस कर दूं, करीब 5 मिनट बच गए हैं, टाइम ओवर होगा मैं तुरंत रीज्वाइन कराऊंगा। ठीक है, विद इन 2 मिनट जो है वो सेशन फिर से जनरेट हो जाएगा, सेम सेशन सेम पासवर्ड सब। ठीक है, ओके सर। हाँ अभी देखिए, नाउ अब अगर हमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम पहले राउटर पे गए। ठीक है, राउटर 1, यहाँ पे 2 लाइनें और चाहे तो हम लिख सकते हैं। राइट, कैसा आता है शुरू में हमारे पास ऐसे लिखा हुआ आता है राउटर और ऐसा प्रॉम्प्ट मिलता है आपको सबसे पहला। Yes, sir. इस प्रॉम्प्ट को कौन सा मोड बोलते हैं? Privilege mode. Privilege mode. User existence mode. यस, गुड मच, यूजर एग्जीक्यूट मोड। और यहीं पे हम इनेबल कमांड डालते हैं और उसके बाद आते हैं हम प्रिविलेज मोड पे। राउटर हैश, ये है प्रिविलेज मोड और यहां से हम जाते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, कौन से स्पेस की कमांड, तब फिर हम आते हैं आपको इस मोड पे। राउटर ब्रैकेट में कॉन्फ़िग, राइट। अब यहां से हम कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या किया, अपने राउटर को एक नाम दे दिया राउटर 1, फिर गए फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे। यहां पे जाके हमने एक देखिए पहला आईपी डाला हुआ है 10.0.0.1 है, इस डायग्राम में जैसा यूज किया हमने यहां पे यूज करेंगे 10.0.0.1। ठीक है, मैं इसे कॉन्फ़िगर करके भी दिखा दूंगा। उसके बाद आपको नो शटडाउन कमांड चलाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें पोर्ट अप करना है। हेलो, हाँ ना बोलते Yes, रहिए। Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. एंड उसके बाद आपको सीरियल इंटरफेस पे जाएंगे। सीरियल इंटरफेस पे देखिए ये आईपी एड्रेस डाला मैंने और साथ में मैंने बोला था कि ये सीरियल इंटरफेस जो है वो डीसी है, इसलिए यहाँ पे क्लॉक रेट रन कराएंगे एंड क्लॉक रेट इज 64,000 बिट पर सेकंड। इस पोर्ट को भी अप कर लिए। ये हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है जो हमने एज पर डायग्राम कर दिया। अभी आप किस स्टेप्स को गौर से ना देखें, अभी स्किप करें क्योंकि इसे मैं जब समझाऊंगा तो आप समझिए। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम दूसरे राउटर पे जाएंगे और वहां भी उसके इंटरफेसेस पे आईपी डाल लेंगे, जहां जिस तरीके से जो कमांड्स रन कराने हैं वो रन करा लेंगे। yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir.
उसके बाद ठीक इसी तरीके से फिर हम राउटर 3 पे जाएंगे और यहाँ भी जो भी कमांड रन कराने हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड राउटर को एक नाम देना, फास्ट इथरनेट पे आईपी डालना, पोर्ट को अप करना, फिर सीरियल इंटरफेस पे जाना, वहां पे आईपी डालना, उसको भी अप करना। इस तरीके से जब बारी बारी से तीनों राउटर पे हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो है वो आपके तीनों राउटर फिजिकली अप हो जाएंगे, बट लॉजिकली वो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक राउटिंग के बारे में हमने कोई टास्क नहीं किया। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो ये कि भाई अब इसमें राउटिंग का क्या करें। तो राउटिंग के लिए सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है स्टैटिक राउटिंग का। यस मोनिका बोलिए प्लीज। मोनिका बोलिए, यू हैव रेज्ड योर हैंड। I think it was by mistake. Okay. Now, what is static routing? अगर हम स्टैटिक राउटिंग को डिफाइन करें तो क्या डिफाइन कर सकते हैं? It is a process by which the routes are defined at router मैनुअल। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रूट्स को हम राउटर पे मैनुअली डिफाइन करते हैं। It can be useful for a small network. राइट? तो स्टैटिक राउटिंग में रूट्स जो हैं वो मैनुअली डिफाइन होते हैं। अब मैनुअली डिफाइन करने का मतलब यहाँ पे क्या है? नाउ वेरी सून सेशन will expire and I will generate the new session immediately. So be careful. I am again announcing it again. I will regenerate your session and you all will